So today we are going to study the important article from the chapter Superposition of Waves called as beat. Question can be asked of such type that what are beats and hence obtain an expression for beat frequency. What are beats and hence obtain an expression for beat frequency. Now, what do you understand by the term beats? That we will discuss first. Whenever two sound waves traveling through a medium having same amplitude, same time period, whenever two sound waves traveling through a medium having same amplitude, same time period, and when they arrive at a point, जब वो किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, they produces alternate maxima and minima of sound. दो आवाज की लहरें हैं जिनका टाइम पीरियड सेम है, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है. जब ये दोनों आवाज की लहरें जब हमारे कानों तक आकर पहुंचती हैं, दे प्रोड्यूस अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ साउंड. हमें कोई आवाज मैक्सिमम सुनाई देगी और कोई आवाज मिनिमम सुनाई देगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, एम्पलीट्यूड सेम है, इनका टाइम पीरियड भी सेम है, बट they have different frequencies. Because of different frequency, they produces maxima and minima of sound called as beats. क्या बताया गया यहाँ पर? Try to get the meaning of the sentence that whenever two sound waves, जब दो आवाज की लहरें, whenever two sound waves traveling through a medium, traveling through a medium, and क्या क्या इनके पास सेम है दोनों साउंड वेव्स के पास? when two sound waves traveling through a medium having same amplitude, and same time period, but slightly different frequencies, and when they arrive at a point, जब ये दोनों आवाजें आपके कानों तक पहुंचती हैं, when they arrive at a point, produces, क्या प्रोड्यूस करती है? yes, produces maximum and minimum sound. They produces maxima and minima of sound. मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है. अगर मैं खामोश बैठता हूं तो उसी वक्त दूसरी भी आवाजें आपके कानों तक पहुंचती है. बाय द एनवायरमेंट में दूसरी भी चीजें, उनसे भी आवाज जनरेट हो रही है. वो आवाज भी हमारे कानों तक पहुंच रही है, मेरी भी आवाज कानों तक पहुंच रही है. यानी कि सेम एम्पलीट्यूड है, सेम टाइम पीरियड है, लेकिन हर दोनों की आवाजों में क्या है? फर्क है. इट मीन्स दैट दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, प्रोड्यूसेस मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ साउंड. मैक्सिमा ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज waxing. Okay, and minima of sound is called as waning. जैसा आपने देखा था, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ फॉर्म्स अ वेव, वन कॉम्परेशन, वन रे रिफ्रैक्शन फॉर्म्स ए लॉन्जिट्यूडिनल वेव of the same type.
maximum of sound is called as waxing, minimum of sound is called as waning. One waxing and one waning forms a beat. One waxing and one waning forms a beat, and the complete process is called as beat. ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? बीट. क्या सुना आपने इसमें? Whenever two sound waves traveling through a medium having same amplitude, same time period, but slightly different frequencies, when they arrive at a point, produces maxima and minima of sound, called as beat. Maximum of sound is called as waxing. Minimum of sound is called as waning. One waxing and one waning forms a beat. Okay. Number of beats heard per second is called as frequency of beat. किसको कहेंगे frequency of beat? What do we understand by frequency? Number of oscillations per second, number of revolution per second, number of vibrations per second, okay, number of rotations per second. यहाँ पर number of beats per second called as frequency of beat, generally represented by the factor small n written as or capital N is equal to n1 minus n2. What are these n1 minus n2? n1 and n2 are the different frequencies. Okay, their difference, one maxima and one minima, forms a beat. Watch it. So, after getting what do we understand by the term beat, let us consider. Let us consider the displacement of two sound waves. Let us consider the displacement of two sound waves. That is, y1 is equal to a sine 2 pi n1t. Equation first. y2 is equal to a sine 2 pi n2t, where यहाँ पर कौन सी चीज क्या कहलाती है? where y1 y2 are called as displacements. Watch it carefully. A be the same amplitude, बराबर है, देखो दोनों तरफ सेम है. A be the same amplitude. T be the same time period. Okay, T be the same time period, but n1 comma n2 are different frequencies. बराबर है, देखो the displacements of two sound waves having same amplitude, same time period, but different frequencies. Okay, the resultant displacement can be written as y is equal to y1 plus y2. Put the values of y1 y2. What we can write? Y is equal to y1 आप जानते हैं a sine 2 pi n1t plus a sine 2 pi n2t. This is the resultant displacement. Okay. Now by using sin c plus sin d formula, by using sin c plus sin d formula, that is the trigonometric formula, we get क्या पाते हैं हम लोग? By using sin c plus sin d, we get that is y is equal to 2a sin 2 pi n1 plus n2 by 2 into t into cos 2 pi n1 minus n2 by 2 into t. देख कर लो पहले इसको क्या बताया यहाँ पर. बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपने दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखे y1 y2, उसका आपने रिजल्टेंट निकाला, दोनों की कीमत पुटअप की, y इक्वल y1 प्लस y2, y1 की जगह उसके नीचे कीमत, y2 की कीमत उसके नीचे.
ये एक बड़ा सा इक्वेशन मिला, उसको आपने क्या तरीके से आगे बढ़ाया, उसको बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला दैट इज sin c plus sin d, what we can write 2a sin 2 pi n1 plus n2 by 2 into t cos 2 pi n1 minus n2 by 2 into t. okay, watch it first, इसको देख लो पहले आगे. So after using sin c plus sin d, we can write y is equal to capital A sin 2 pi in the bracket n1 plus n2 by 2 into t, where what is A? A be the resultant amplitude. What we can write? A be the resultant amplitude, and it is equal to, क्या है इसकी कीमत? कौन से पॉइंट्स A में छुपे हुए हैं? What is A? A is equal to, see the factor, इधर का 2A, और ये पूरा फैक्टर उठाकर आपने A में डाल दिया है. That is capital A is equal to, what we can write? It is 2A cos 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t. देख कर लो उसको. So we have the resultant amplitude, that is A is equal to 2A cos 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t. ये एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है. कैपिटल A is equal to 2A cos 2 pi n1 minus n2 by 2 into t. Okay, this factor that is, it will be it will be maxima. ये फैक्टर मैक्सिमा हो सकता है, यानी कि this complete cos theta, that is cos of 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t, it will be maxima. ये मैक्सिमा कब हो सकता है? cos theta मैक्सिमा कब होगा? मैक्सिमा जिसकी कीमत 1 आना चाहिए. तो थीटा कितना रहा तो cos का कीमत 1 आएगा. if it is equal to 0, pi, 2 pi dot dot, let us consider that is 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t is equal to, आपने 0 कंसीडर किया. आप ये टाइम पीरियड निकालेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड का रिलेशन किससे है? फ्रीक्वेंसी से. सो नथिंग इज देयर, वन वी कैन राइट दैट इज t is equal to 2 into 0 upon 2 pi in the bracket n1 minus n2. आगे देखो बराबर, that is 0 upon 2 pi in the bracket n1 minus n2. if the numerator is 0, the answer is 0. okay, एक वैल्यू आपने ली. सेकंड वैल्यू, नाउ 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t is equal to, अब आपने क्या लिया? पाई लिया है. वॉच इट केयरफुली. 2 pi n1 minus n2 by 2 into t is equal to, आपने 0 लिया था, उसको सॉल्व किया. अब आपने क्या लिया है? पाई लिया है. आप टाइम फैक्टर निकाल रहे हैं, that is t is equal to, क्या होगा? this 2 multiplied this 2 pi upon 2 pi in the bracket n1 minus n2. है क्या? देखो बराबर, this 2 pi gets cancelled. what we get? t is equal to 1 upon n1 minus n2. we are well familiar, frequency is inversely proportional to time period, that is nothing but time period t is equal to 1 upon n, or n is equal to 1 upon capital T. we are well familiar. so we are getting linear equation. this is the second case. let us consider similarly उसी तरह से, that is 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t is equal to how much? थर्ड कीमत क्या है आपके पास? 2 pi है. therefore t is equal to क्या बन गई? this 2 multiplied to this 2 pi, it becomes 4 pi upon 2 pi in the bracket n1 minus n2. this pi gets cancelled. 2 1s are 2, 2 2s are 4. so once again t is equal to 2 upon n1 minus n2, जबकि ये n1 minus n2 यानी क्या है? कैपिटल T है, multiplied by twice. okay, so these are the equations
These are the equations which tells us that this is the frequency for maxima of sound. क्योंकि ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है, दैट इज कैपिटल T इज इक्वल 1 अपॉन n1 minus n2. Okay, this is T is equal 1 upon n1 minus n2. And what is T? T is nothing but 1 upon n. ये T क्या है? It is the reciprocal of frequency. वही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है. ओके, ये पहला इक्वेशन जो आपने इस हिसाब से बताया, दिस इज द ट्वाइस ऑफ 1 upon n1 minus n2. So these are the frequency equations for maxima of sound. जब आपने कीमत क्या ली, इट विल बी मैक्सिमा, ये पार्ट मैक्सिमा हो सकता है कब, कॉस एंगल मैक्सिमा कब होगा, इफ इट इज इक्वल टू 0, कॉस 0 यानी क्या है 1, इफ इट इज इक्वल टू पाई, कॉस पाई फिर से 1, इफ इट इज इक्वल टू 2 पाई, कॉस 2 पाई वो भी 1 है. सो दीज आर द वैल्यूज फॉर मैक्सिमा ऑफ साउंड. वॉच इट केयरफुली. So after getting the values for maximum of sound, let us consider once again the resultant amplitude, that is A is equal to 2a cos 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t. Okay, here for minima of sound, minimum sound के लिए that is the factor, that is cos 2 pi n1 minus n2 by 2 into t will be, ये cos एंगल मिनिमम होना चाहिए, ये cos एंगल 0 आना चाहिए. cos का आंसर मिनिमम कब हो सकता है, जब उसका एंगल कितना हो 90, that is nothing but pi by 2. next 3 pi by 2, 5 pi by 2 dot dot. So take one by one value. The first case, पहला केस लीजिए, that is 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t is equal, पहली वैल्यू आपने ली pi by 2. सेम प्रोसेस फिर से टाइम निकालिए, that is now t is equal to क्या हो गई, this is 2 pi upon this 2 2s are 4 pi in the bracket n1 minus n2. क्या होगा, pi pi gets cancelled, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so we get 1 upon twice in the bracket n1 minus n2. ये आपका पहला कीमत है. Let us consider second. Now 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t is equal, अब आपने क्या लिया है 3 pi by 2. सेकंड केस क्या हो जाएगा, so t is equal to this 2 multiplied to this 3 pi, it becomes 6 pi, 2 2s are 4 pi in the bracket n1 minus n2, pi pi gets cancelled, 2 2s are 4, 2 3s are 6, so we get t is equal to 3 upon twice in the bracket n1 minus n2. यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 upon twice in the bracket n1 minus n2. Watch the values. These are the values for minima of sound. Answers आपको कैसे आए देखो, 1 by 2, 3 by 2. Next, similarly उसी तरह से 2 pi in the bracket n1 minus n2 by 2 into t is equal to 5 pi by 2. अब यहाँ पर क्या करेंगे, t is equal, this 2 multiplied here it becomes 10 pi, and this 2 multiplied here it becomes 4 pi in the bracket n1 minus n2. Once again pi pi gets cancelled, 2 2s are 4, 2 5s are 10, therefore t is equal to, finally we got क्या पाया हमने 5 upon 2 in the bracket n1 minus n2. What is value? These are the values for minima of sound. Watch it.